आज हम लोग विंडोज फंक्शन का लीड एंड लैग देखेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे कि लैग एंड लीड होता क्या है, और हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं तो लीड एंड लैग को कैसे यूज करते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, कैसा इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है लीड एंड लैग पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम वंस अगेन टू द एनालिस्ट एसेंस। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन so I can also grow along with you. Okay, so let's start. So first, understand what is lead and lag. So lead always check the previous record. Okay, it check the Mohan of previous row record and then give the result. But lead always check the next record of data. Okay, you can say the next year record, and for the lag you can say the previous year record. Okay, so let's suppose you are participated in interview and your interviewer asks you, could you please print the department voice a previous record and next year record salary and compare the both salary. Okay, then how you do that? So simple, we use Windows function and use the lead and lag. Okay, and in between, if they ask you to print second, third, or fourth, whatever, then use the dense rank or rank. Okay, so let's start. First, I'm going to use this table. In this table, we have salary, department, and employee ID and joining date. Okay. Okay, and the table name is employees this time. Okay, so let's start from employees. And now I'm passing to here the lag function to checking the previous record. Okay, so lag function always needs some parameter. So I'm passing the salary as a parameter. Okay, and then we using over Windows command. And what I'm doing this time, rather than breaking this department or clubbing the department, I'm using first the salary. Okay, order by salary. So I just wanted first to print all the salary in highest to lower way. Okay, so I'm putting here order by order by salary DESC means what I'm telling to him, telling to this data, please print the record in highest salary, okay, to lowest in previous record of salary. Okay, so I'm putting alias as a previous year record, previous record, RECORD record. Okay, no need to space here. And then from employees table, right? From employee. If we execute this query, let's understand what I'm doing in the here. तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं लैग पास कर रहा हूँ to check the previous of record. Okay, what is the salary of previous record of Mohan in admin department, and immediate after that. Okay, using order by to arrange the salary highest to lower. Okay, and putting the alias to creating one Windows column, and Windows column name would be a previous record. Okay, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरा क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर रहा है और इसमें ये शो कर रहा है कि जो प्रिया है उसका जो प्रीवियस रो का रिकॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम नल प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे डोरविन का 65,000 है, बट ये 7,000 प्रिंट करवा रहा है। तो लैग क्या करता है, प्रीवियस रिकॉर्ड फाइंड करता है। तो ठीक है, तो एज मैंने क्या करा है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रिंट करवा रहा है, सैलरी हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो ये क्या कर रहा है कि अब डोरविन का डेटा को जाके चेक कर रहा है फर्स्ट डेटा से, वो उसको मिल गया, ठीक है। मिल गया तो उसको 7,000 प्रिंट करवा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड तो इसका यही है ना। अब वो इमीडिएट नेक्स्ट वे में जा रहा है, फिर ये चेक कर रहा है प्रीवियस रिकॉर्ड, उसको 65,000 मिल गया, वो प्रिंट करवा दिया। लाइक वाइज 55,000 में प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक कर रहा है, वो उसको मिल गया 6,000, प्रिंट करवा रहा है। लाइक वाइज सिमिलरली। ओके, टिल द एंड। तो प्रीवियस लैग सैलरी क्या करता है कि ऑलवेज चेक द प्रीवियस रिकॉर्ड। ओके, इट डज नॉट लुक एट द प्रीवियस रिकॉर्ड इन द टेबल, इट लुक द प्रीवियस रो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वाइज। ओके ओके, यहाँ पे प्रीवियस रो चेक कर रहा है। नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट वेट, अगर मैं इसको डिसेंडिंग को हटा देता हूँ, अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे क्या देगा, ये भी चेक करते हैं। तो अब क्या कर रहा है वो, लोवेस्ट से हाईएस्ट कर रहा है। तो
प्रीवियस रिकॉर्ड इसको नहीं मिला, वो नल प्रिंट करवा दिया। अब ये यहाँ से चेक करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड मिला उसको 3000, लाइकवाइज वैसे प्रिंट करवा रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू भी पास कर रहे हैं, जैसे मुझे चेक करना है कि बाय नेक्स्ट, अब मैं यहाँ 2 और कॉमा 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मुझे 2 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड का डेटा को चेक करवाओ, और 0 बाय डिफॉल्ट में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे 0 दे देगा। ठीक है, फर्स्ट टू रिकॉर्ड 0 दिया है, क्योंकि फर्स्ट टू रिकॉर्ड का कोई इम्प्लॉय का फर्स्ट टू रिकॉर्ड का डेटा नहीं है। ठीक है, 2 साल पहले। अब वो जो ये फर्स्ट टू रिकॉर्ड को चेक कर रहा है उसको 0 मिल रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि अब ये इसको इससे चेक करने जा रहा है। ठीक है, उसको 3000 फर्स्ट 2 इयर्स के बाद उसको दो दो गैप, ये अब ये ईयर में नहीं रहा है, रिकॉर्ड में ये ले रहा है। ईयर में इसलिए नहीं ले रहा है कि कोई भी डिफरेंशिएट ईयर में नहीं है, सिर्फ एक ही ईयर में। तो ये दो रिकॉर्ड को चेक कर रहा है, फर्स्ट टू रिकॉर्ड को 0 पॉइंट करा रहा है, फिर दो चेक कर रहा है। अब उसको 2 रिकॉर्ड के बाद अवेलेबल डेटा मिल गया, वो चेक करके प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे लीड फंक्शन क्या करता है, यूज करता है। अगर यहाँ पे मैं लैग फंक्शन यूज, अगर मैं यहाँ पे लीड पर मैं पास कर दूं, तो अब करेगा कि नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पास कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्या चेक करेगा कि नेक्स्ट रिकॉर्ड को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय DESC। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है कि इस रिकॉर्ड पे नेक्स्ट रिकॉर्ड उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट को, करेंट को नहीं, इसका नेक्स्ट कौन हो सकता है, 65। तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इसको। I hope I don't know exactly you understanding or not, but see, what does it mean? This is my current salary. Okay. So he's checking immediate record of after next, not checking previous, not checking current. He's checking immediate of next. So what he's doing, he checked the next of record. He found 60,000, print 60,000. Immediately check next. He found 66,000. He print 6,000. Immediately he check 55, found 5,000. It print 55,000. Sorry. Immediately check that what is the next of 6,000? 55. Likewise, in the last it will print null. Okay, because he's not found the next of this employee. So it print the null. So हम कुछ ऐसे लीड एंड लैग को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोनों पास करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, लीड एंड लैग इन एजी, एंड यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे पार्ट कर रहे प्रीवियस, PREVIOUS, previous. See, the way I explain everything is there, right? Let's suppose I want the data in department wise. What is my next uh, report I want? I want to break all the department or club all the department wise salary. Okay. So मैं कैसे बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक जगह कर दो, फिनांस फिनांस एक जगह कर दो, HR एक जगह कर दो, और उसके बाद मुझे सैलरी प्रिंट करवा के दो। तो मैं कैसे यूज करूंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर दूंगा कि मैं इसको पास कर दूंगा डिपार्टमेंट। जब ऐसे मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूँ, पार्टीशन बाय DEPT, डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर ओ आर, ऑर्डर मेरा रह गया था यहाँ पे, निकल गया जब मैं इसको ब्रेक किया तो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये डाल दे रहा हूँ, लीड को हटा करके इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको कर दे रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ से। जब मैं ये प्रिंट करवाऊंगा तो क्या करेगा, और ये पार्टीशन बाय, ये जो डिपार्टमेंट है उसको क्लब कर देगा डिपार्टमेंट वाइज सीक्वेंशियल, जैसे IT फिनांस फिनांस, HR एडमिन एडमिन। ओके, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, अननोन कॉलम, डिपार्टमेंट नेम, विंडोज पार्टीशन। ओके, सो हियर द नेम इज रॉन्ग, DPT, नाउ इट विल execute again, DEPT, name in the windows partition by, let me check what I have passed here. So let's start from employee, DEPT, ओके हियर, करेक्ट तो है यार, फिर से मैं पास कर दे रहा हूँ, पार्टीशन बाय
DEPT_name, right? ऑर्डर बाय सैलरी। अब तो कुछ नहीं छूट रहा है ना। अगेन unknown column DPT, what is this man? Aha, यहाँ here is also okay. DEPT, guys, do not make mistake while writing, now see। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट वाइज मुझे ब्रेक कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एडमिन को किया, ठीक है। तो ये चेक किया कि प्रीवियस रो रिकॉर्ड में इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो उसको नल प्रिंट करवा दिया। और इमीडिएट आफ्टर ऑफ प्रीवियस ये क्या हो जाएगा, 40, इसका प्रीवियस क्या हो गया 45, तो वो प्रिंट करवा दिया इसका, ठीक है, उसका 45। पहले अब ये एडमिन में देखो, डिपार्टमेंट है एडमिन, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रीवियस उसको नहीं मिल रहा है, उसको क्या प्रिंट करवा दे रहा है, नल। अब इसका प्रीवियस चेक कर रहा है, 45,000 मिल रहा है, उसको कर दे रहा है 45,000। सेम फिनांस में वो कर रहा है, प्रीवियस नहीं मिल रहा है, उसको प्रिंट करवा दे रहा है, देन 65,000 प्रिंट करवाएगा। गाइस इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, the only checking the previous record is not counting, putting the print, and immediately after that is putting the next value, okay। that's what this mean the next as well। यहाँ पे भी वही कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अब नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू बॉन्ड द रेंज ऑफ दैट सैलरी, ओके। लेट्स सपोज माय डायरेक्टर और माय मैनेजर आस्क मी टू summarize the salary and create a new column to bond the salary between high range to low range, okay, and also provide the equal. Let's suppose the employee salary is equal, okay, so how you do that? So first analyze the question what he asked. He asked to bond the range salary, create the range salary. If employee have high salary, put it high. If have lower than previous salary, put it low. If it is current to that, then put it the same as, okay. So we'll use in this scenario a case statement. Okay, case statement is a functional statement in a SQL we use to create the rules. Okay, so let's start. Select star from employee, or else do one thing. Just in this copy this one. Okay, and paste it here. Comment this one. Comment all this one, or else remove this one. Okay. So now my question, I want to create the case statement. Okay, just put it here. Case, case, right? Okay. When 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 the salary, okay, salary is greater than is equal to this one, right? Then I want, then what will be the case? If it is created, then my bond is higher, higher salary than higher salary as previous, as than previous. PREVIO previous. Okay. Let's suppose, let me do this one as well, copy and paste. Oh, what's going on now? I'm putting the next case statement. Oh, what is this? When when salary is less than this one, then what would be the case statement? Lower, right? Lower, lower than previous, previous. And the next statement, what they do? We put the equality, right? We put the equality. Let me copy this one once again. We're putting this one when is equal to this one. Okay. Then it should be equal. There should be equal.
equal to same salary. Salary, okay. Put a comma here. Okay, I'm doing mistake somewhere. When salary over department, high salary. I'm missing somewhere some comma. Okay, nothing wrong in this code. Oh, what I'm missing on it. So what we need to here, we into this statement, right? We start case, then we ending in salary range. Okay, range. I'm creating a one column is calling range, and in this the statement. Okay, salary range. Now it will give me exact answer what I want. Okay, so this way you can summarize the report. Okay, so whenever you found the lower than the previous salary, putting lower. Whenever found the higher than it, putting higher. Okay, see higher equal to salary lower. So you can do this way as well. Now let's move to our questions. Okay, so the first question is, show me each employee salary along with the previous employee salary. Okay, and show me each employee salary along with the previous employee salary. Both are the questions same. Show the difference from previous employee salary. So let me do that. This one. This one is much means this is more tough as compared to this one. Okay. So first this one I'll do this one. Or also this is a simple question. We need to just create the lead function and then lag. Okay. Minus this one after lag. Let me do that. So what you have to do that, just I'm copying this one. So no need to write multiple times. I'm pasting here from employee, right? Then I'm executing this one. अभी मुझे क्या बोल रहा है कि show me the difference, right? So what I'll do here create a salary, 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 salary minus, okay, this one. So we'll get the difference. We have to understand the question. So difference is 500, 1500, kind of. Okay. So guys, hope you understand, and I'm hoping you understand. If you not, then check in repetition way. Okay. And if you feel this video is good to explore your career, then please subscribe to my channel. Okay. Thanks. Bye bye. Take care.